तो दोस्तों यहाँ पे हैं मोटरसाइकिल के मेंबर हे भाई एंड ऑल। पीछे तापस भाई हैं और रघु है। तो हम चल रहे हैं इन्फो सिटी की तरफ और टाइम भी हो चुका है। तो लेट्स गो। नंबर ऑफ वॉलंटियर्स हियर और भी राइडर्स आने वाले हैं। अभी फिलहाल सिर्फ कुछ ही ग्रुप्स आए हैं। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे सुपर बाइकर्स आ चुके हैं एंड यहाँ से गवर्नमेंट का जो कैंपेन है वो शुरू होने वाला है, उड़ीसा ऑन रोड्स। तो आज यहाँ पे फ्लैग ऑफ होने वाला है एंड राज अंकल हाय, कैसा लग रहा है ये नया इनिशिएटिव बहुत बढ़िया गवर्नमेंट का? बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया। दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा गवर्नमेंट कुछ कर रहा है हमारे लिए। Definitely, it's a very beautiful thing. More than that, it is a way of giving back to Odisha. Yes. What Odisha has given to us. Yes, that's true, that's true. So आप वो उड़ीसा टूरिज्म का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें ज़रूर फॉलो करें एंड वहाँ पे आपको उड़ीसा के रिलेटेड जो भी सीक्रेट स्पॉट्स हैं या तो जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो भी इको टूरिज्म स्पॉट्स हैं, उस सब के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ऑल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफिसर्स हियर दैट आई प्लीज थैंक यू।
round of for them. And I would like to mention the name of the clubs. We have Harley Owners Group Hogs, the Motorcyclists, Todd. Please keep applauding for your fellow bikers. Triumph Owners Riding Club, the Motorsogs, Biker Republic of Odisha, As We Travel, Wild Hawk Kalinga, the Warriors, Women Biking Squad as well. And yes, we also have Car India and Bike India. They are two magazines based out of Mumbai and Pune, and their team is already on a circuit. They are already exploring Odisha, and they'll continue with this campaign as well. And they also have a special guest with them from Indore, Kalyani Putekar, who's also been traveling for them. So big round of applause for all our participants. Well, to give you a much better insight into this wonderful initiative, I would now request the Commissioner Cum Secretary, Mr. Vishal Dev, to present the welcome address and also read out the message from the Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik.